सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज अभी मैं लेके बैठ चुका हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि आई हैव अ टेस्ट कमिंग अप ऑफ इकोनॉमिक्स इन अ फ्यू डेज। तो आई वाज जस्ट रिवाइजिंग द नोट्स ऑफ माइक्रो का एक चैप्टर। आई हैव वन चैप्टर कमिंग फ्रॉम माइक्रो एंड टू फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। सो आई वाज डूइंग द माइक्रो का चैप्टर हियर, आई वाज रिवाइजिंग द नोट्स, ऑल्सो रेफर कर रहा था मैं बुक को मीन वाइल इन बिटवीन। ओके, मिस्टेकनली आई टोल्ड यू गाइज कि मेरा कुछ दिनों बाद टेस्ट है, बट इट वॉज एक्चुअली द वेरी नेक्स्ट डे। एंड वो सब पढ़ाई वगैरह छोड़ के मैं शाम में निकल गया था मस्त फ्रेंड्स आउटिंग में। यस। While when I was back home, तो I did some graphs की practice। जितने भी graphs थे माइक्रो के चैप्टर के, वो मैंने सारे बना बना के प्रैक्टिस किया। एंड देन आई वाज इनटू प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ऑफ द वेरी सेम चैप्टर। तो मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे बनाए। I was done with that, I started with statistics. इसमें I started with one of the chapters that was coming and it was way too long. I mean इसकी लेंथ ही देख के बंदा गिव अप कर दे, लाइक इतना बड़ा चैप्टर था। बट एनीवे लेक्चर देखते देखते I was taking notes as well. After the lecture and the notes, I did not do any question practice for statistics क्योंकि I was pretty confident about the numericals. मैंने multiple times इसके questions वगैरह बनाए हुए थे statistics के दोनों ही chapters के. So I was just going through the concepts. I immediately started the next chapter of statistics. उसके भी same lectures लिए and then notes बनाए. I was taking notes in rough for the next chapter क्योंकि I did not have that much time मैं proper notes बनाऊँ. So I took just notes in rough and उसको जल्दी से when I got done I revised them. and उसको करने के बाद मैंने दोनों ही statistics के chapters को revise किया, micro के chapter को revise किया. And until then it was already 11, so it was time to sleep. And yeah, that was all about this day. Now coming to the next day, in the evening I sat down for studies and again I was doing economics. Literally मेरे को आज एक assignment मिला हुआ था economics में. I had to solve 43 questions. Yes, 43 questions in a single day. And I was like too freaking frustrated about that. But anyway, मैं पूरे vlog में तुम्हें बस economics करते हुए देखने वाला हूँ क्योंकि that's what all I did. I was halfway through the assignment, like I had done 27 questions. तब तक already it was almost around 11:30 in the night. And भाई साहब इसके बाद तो I was all कि मैं lectures के भरोसे हूँ बस. I started copying down the answers. इससे पहले I was solving them on my own, but इसके बाद I was too done with everything. I needed to sleep क्योंकि next day I had school. I had to wake up early 6 in the morning. So I started copying down the answers and उसके बाद तो like my speed
increased insanely, like insanely. आधे घंटे के अंदर मैंने बाकी सारे questions निपटा दिए थे. I know that was kind of cheating, but I had to wake up early tomorrow and I couldn't do anything else. So yeah, that's what I did, and finally after hours of mehnat I was done with the assignment. And उसके बाद I was too glad, grateful कि हो गया finally. And उसके बाद it was already like midnight, so I just slept, and yeah, that was all about the vlog. Hope you all enjoyed. Bye bye.